सबसे पहले हम लोग क्विक रिव्यू कर लेंगे या देख लेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों को इसमें पढ़ना है। ये सेमेस्टर 4 जो मैथमेटिक्स जनरल सब्सिडी पेपर है वो टोटली रांची यूनिवर्सिटी के सिलेबस पे बेस्ड है। ये सेमेस्टर 4 में मैथमेटिक्स सब्सिडी या जनरल पेपर जो है वो 2 यूनिट में डिवाइडेड है, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। यूनिट 1 एंड यूनिट 2। यूनिट 1 में हमें जो है वो है द रियल एनालिसिस एडवांस लेवल, दैट इज रियल एनालिसिस 2 इसको हम लोग कह सकते हैं, जिसे हम इसमें हम लोगों को रैमन इंटीग्रेशन, डिफिनेशंस, ऑक्सिलरी सम एंड इंटीग्रेबिलिटी, कंडीशन, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, इसके बारे में यहाँ पर देखना है। सेकंड यहाँ पे जो यूनिट है हमारा वो है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। Okay. So in complex variable, we have to study about the real function of two variables, simultaneous and integrated limits, continuity, partial derivative, differentiability, relative necessary and sufficient conditions, function for complex variables, limit, continuity, derivative, Cauchy-Riemann condition, that's equation, analytical function, harmonic function, और स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशंस में हम लोग को बाइलीनियर, कॉन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन और इफेक्टिव एनालिटिकल फंक्शन के बारे में देखना है। यूनिट 2 जो है, यूनिट 2 में फर्स्ट टॉपिक इज सेट थ्योरी एंड सेकंड वन इज मैट्रिसेस। सेट थ्योरी में इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट्स, जनरलाइज्ड सेट्स ऑफ ऑपरेशंस, डी मॉर्गन्स लॉ, सेट मैपिंग्स, काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट्स से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। एंड मैट्रिसेस में मैट्रिसेस हैं, ऑपरेशंस है, मैट्रिसेस, मैट्रिक्स अलजेब्रा, काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस, डिफरेंट टाइप्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जाएंगे मैट्रिसेस। पहले हम लोग मैट्रिसेस कंप्लीट करेंगे, देन फिर सेट थ्योरी प्योर करेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, देन लास्ट में हम लोग करेंगे रियल एनालिसिस। सो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिक्स। तो फर्स्ट हम लोग इसके सिलेबस को देखेंगे कि इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। सो इन मैट्रिक्स वी हैव टू स्टडी अबाउट द मैट्रिसेस, दैट मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या होते हैं उसके बारे में देखना है। सो मैट्रिसेस, देन वी हैव टू स्टडी अबाउट द ऑपरेशन ऑफ ऑन मैट्रिसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और उस पर क्या क्या हमारे ऑपरेशन है, जैसे प्लस, एडिशन, subtraction, multiplication and different types of operations, different types of matrix वो। next is matrix algebra, fourth one is kind of matrices, fifth transpose and adjoint and inverse of a matrix, transpose, adjoint and inverse of a matrix. And the last one is solution of system of linear equation. ओके, सो ये मैट्रिक्स का सिलेबस है जिसमें हम लोग को इतने टाइप्स में देखना है। इससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे और थ्योरम भी रहेगा, थ्योरम्स के प्रूविंग को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विथ definition of matrix and then we see about the types of different types of matrices. So first is definition of matrix. Definition of a matrix. So as we studied it in the elementary classes, that's a system of
a system of any m into n numbers arranged in a rectangular array of m rows and n columns is called a matrix of order m into n. Okay, so for let A is a matrix, so we generally written as A11, A12, A13. Let there are m rows, so that is A1n. Similarly, A21, A22, A23 up to A2n, A31, A32, 33 up to 3n. And let इसे हम लोग और एक्सपेंड कर सकते हैं. So last number is A M1, A M2, A M3 up to A Mn. So this is m into n matrix. अब यहाँ पे m क्या है, n क्या है? So here m is number of row and number of columns के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं. So this is m is number of row and this is column. So row कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? ये जो हमारे हैं horizontals lines, these are called rows, and these vertical lines are called columns. So यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे m rows है और n columns है. तो जब भी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर हम लोग को लिखना भी होगा तो रो को पहले लिखेंगे, कॉलम को बाद में लिखेंगे. Generally matrix is denoted as A is equal to element of matrix is equal to Aij, where I value of I is less than or equal to capital M greater than 1 and J is less than equal to N greater than equal to 1. Okay, I for ith row, J for jth column. So this is the definition of a matrix, rectangular arrangement of m rows and n columns. Generally जो हमारे experiments या datas हमारे पास जो अवेलेबल होते हैं उसी को हम लोग अरेंज करते हैं और अरेंज करने के बाद उसकी कैलकुलेशन करते हैं. इसमें हम लोग वर्ड प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कैसे इसमें हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में. टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. So first one is row matrix. So a matrix has only one row. That's why it is called row matrix. So only one row. So that is Aij m into n is called row matrix if m is equal to 1. For example, 1, 2, 3. So here we have one row and 3 columns, so we can write it as 1 into 3. Also in row matrix, number of column is greater than number of row. Here 3 is greater than 1, so number of column is greater than number of row.
Okay. Next one is column matrix. Column matrix. So same definition, just reverse. Only one column. A matrix having only one column is called column matrix. That is Aij m into n is column matrix if n is equal to 1. Okay. For example, same definition, same example, 1, 2, 3. Here we see that there are 3 rows and 1 column. यहाँ पे 3 is greater than 1. Here is row is greater than number of column matrix. Number third is horizontal matrix. So if number of row is less than number of row is less than number of column, then it is called horizontal matrix. Number of row is less than number of column. That is m is less than n. सेम एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में, हम लोग रो मैट्रिक्स को भी ले सकते हैं. ठीक है, दिस इज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स. नंबर 4, vertical matrix. So vertical matrix just opposite of horizontal matrix. Number of row is greater than number of columns. That is m is greater than n. Same, the column matrix is an example of vertical matrix. Column matrix जो है वो vertical matrix का example है. Next one is number 5th, vertical null or zero matrix. Null or zero matrix. A matrix whose all members are zero is called zero matrix. A matrix whose all elements are zero is called null or zero matrix. Okay, for this Aij should be equal to 0. Okay, जैसे हम लिख सकते हैं a is equal to 0 0 0 0 0 0 0 0 0. So a is a null matrix of order 3 into 3. Number of row 3 है, number of column भी यहाँ पे 3 है. Next is बहुत important, number 6, square matrix. As we see that square matrix, square कैसा बनता है?
जिसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं. सो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम. If in a matrix number of rows is equal to number of columns, that is m is equal to n. M is denotes number of row and denotes number of column, then it is called square matrix. For example, A is equal to 3 1 2 1 1 3 6 0 1. So this is a square matrix of order 3 into 3. Again, B is equal to 1 2 3 4. So B is a square matrix of order 2 into 2. Okay, so it is a square matrix. Number 7 is diagonal matrix. So diagonal matrix is the square matrix having all elements except diagonals are 0 are called square matrix. That is Aij having order m into n, in which m should be equal to n. That means ये मैट्रिक्स जो है डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले वो मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए. सो m should be equal to n and Aij, the elements are 0 if I is not equal to j. सो डायगोनल एलिमेंट्स कहने का मतलब है कि हम लोग मैट्रिक्स देख रहे हैं कि जिस मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसको छोड़कर ऑल एलिमेंट्स आर 0. दैट मीन्स ए मान लेते हैं 3 into 3 का मैट्रिक्स है. सो डायगोनल एलिमेंट्स 1 2 3 0 0 0 0 0 0. सो ये जो हमारा डायगोनल एलिमेंट है, ये जो हमारा डायगोनल एलिमेंट है, जनरली डायगोनल एलिमेंट्स इस तरह से हमारे डायगोनल से डिनोट करते हैं. जो हमारे A11 A22 A33 ये सारे एलिमेंट्स जो होते हैं दे आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स. सो ये एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स और एलिमेंट्स आर 0, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड diagonal matrix. But that matrix should be square matrix. The first condition is that matrix should be square matrix, then we will consider about the diagonal matrix, diagonal elements. Next, number 8, scalar matrix. So again we will start with a square matrix. So a square matrix all elements except in diagonal are 0. That means first it should be diagonal matrix and all principal diagonals and all principal diagonal elements, principal diagonal elements are equal. प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो है इक्वल होने चाहिए. सो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर स्केलर मैट्रिक्स? फॉर स्केलर मैट्रिक्स, number 1 condition is that matrix should be square matrix. So m should be equal to n. Number 2, it should be diagonal matrix. That means Aij, that means except diagonal elements, all elements should be 0 if I is not equal to j. And number 3, Aij should be equal to a constant number if I is equal to j. Constant number कुछ भी हो सकता है, any number, but that numbers is all diagonal elements में वो same होना चाहिए. For example, a is equal to 5 0 0 0 5 0 0 0 0. So first of all, it is a square matrix.
because it is a 3 into 3 matrix. Next, all elements except principal diagonals are 0. यहाँ पे एक मिनट, जस्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे 5 होगा. So all elements except principal diagonals are 0. So it is a diagonal matrix and all diagonals elements are equal. ये equal होने चाहिए. ये diagonal elements जो होंगे यहाँ के सभी equal होंगे, तभी it is called a scalar matrix. So how important is square matrix? ये हम लोग अभी देख रहे हैं. Square matrix, then this is related diagonal matrix, then diagonal matrix is scalar matrix. The 9th number is unit matrix. So first of all, that matrix should be scalar matrix, and that scalar matrix all elements should be equal to 1. यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं होना चाहिए. k के जगह पे सिर्फ 1 होगा, बाकी सारे कंडीशन सेम होंगे. सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स in which all elements except in diagonals are 0 and all principal diagonal elements are unity. Okay, so for unit matrix, what are the conditions? Number 1, number of rows should be equal to matrix. That means that matrix should be square matrix, first condition. Next, all elements except principal diagonals are 0. That means it should be diagonal matrix, and principal diagonal elements is equal to 1 if I is equal to j, where number of row is equal to number of column. Example unit matrix generally denoted by I. So it is 1 0 0 0 1 0 0 0 1. So since it is also it is denoted as I3 because it has order of 3 rows and 3 columns. If we write I2, then that matrix should be written as 0 1 0. बहुत सारे क्वेश्चंस में डायरेक्टली I1 I2 I3 लिखा हुआ रहेगा. I1 नहीं, I2 I3 इस तरह से लिखा हुआ रहेगा. That means we have to put the value of I3 is equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1, and for I2 we have to put the value 1 0 0 1. So this is the example of unit matrix. So that's फर्स्ट पार्ट हमारा आज यहाँ कंप्लीट हुआ, जिसमें हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हायर लेवल्स ऑफ मैट्रिक्स में देखेंगे कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, व्हाट इज सम सब मैट्रिक्स, एंड हाउ वी कंपेयर द मैट्रिक्स इन if two matrices are given, how we compare them, how add, कैसे हम लोग ऐड कर सकते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हायर लेवल्स में हम लोग देखेंगे, और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो दैट्स टुडेज क्लास. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. तो होपफुली इसी तरह से हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे, और वीडियो अपलोड करने के बाद हम लोग सबसे पहले मैट्रिक्स के सारे वीडियोस का अपलोड करेंगे. उसके बाद फिर सेट थ्योरी हम लोग देखेंगे. सेट थ्योरी के बाद फिर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, एंड देन फिर रियल एनालिसिस करके हम लोग ये सेमेस्टर 4 का जो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसको हम लोग कवर अप करेंगे.